Good morning, ma'am. Good morning, Rahul. Yes, beta. So now which para we have to begin? On page number 33, second paragraph. Second paragraph, okay. And it was, we had already done how did his mother help him, okay. And mother also took Bright on the trips, brought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments, okay. And also helped in many other ways. As Richard, you know, he was the only child, he did not have any companion or something, so he couldn't play any sports. Clear? Was Yes, it ma'am. clear to everyone? And he collect rocks, fossil fuels, coins. Ha. Chalo. I was his only companion from here. Okay, put the Yes, ma'am. date. Hurry up, beta, put the date. So I was, yes, Ishika. मैम आज डांडिया कौन से ग्रुप पे जमा करानी है? Dandiya ka मैम kya पिक्चर्स What was the message? There was nothing for Richie to do. Fruity Seni, what happened? Why you are raising your hand? Fruity, some problem? No, ma'am. तो हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो कि मॉर्निंग में? तो मदर कहती है when my son, you know, he did not have anything to do, I used to find work for him. Not physical work, ऐसा नहीं था कोई physical work ढूंढती थी, but mental things, okay, but learning things, you know, to learn something, to know something. He liked it and he wanted to learn. और Richard को ये सब पसंद आते थे. Why? Because he was interested in learning. Okay. Now who is this student without name? Yes. Okay. And learn he did. He earned top grades in school. Okay. Now what does mother says? You know, mother, she said that whenever Richie did not have any work, she used to make him learn. And even Richard, he was very much interested in learning things. And in the school also, he earned top grades. He was an intelligent student. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. Okay. On everyday things, मतलब जो daily work थे उसमें वो बिल्कुल जैसे और दूसरे बच्चे होते हैं, he was similar to them. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Underline this. When he was in the second grade, he collected 25 species of butterflies, 25 kinds of butterflies that were found around his hometown. See, the box has been given in your book. Yes, ma'am. You can see the box, you know, the box has been made now.
So all different kind of species are mentioned in it that he found. Underlined, beta? समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. Now, he said that when I was in second grade, I collected at least 25 species of butterfly, or shayad that would have been the end of collection of butterflies, okay? और इतनी सारी species collect करने के बाद मुझे लगा कि मेरा end है, बहुत सारे मैंने butterflies की species collect कर ली, and now this is the end. But what happened? कहते my mother, you know, she brought a children's book, और उस book का नाम था The Travels of Monarch 10. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America. Okay. Now see, the curiosity in him, it increased. जो curiosity, eagerness थी ना उसके अंदर, वो बढ़ती गई है ना रिचर्ड के अंदर. पहले तो सोचा 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट कर लिए, नाउ इनफ है ना, अब कोई कलेक्शन की जरूरत नहीं. लेकिन मदर लेकर आई जिसमें ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, मोनार्क होती है बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई की स्पीशी होती है. तो वो कहते हैं कि उस बुक में इट वाज मेंशन कि किस तरह से ये मोनार्क बटरफ्लाईज जो हैं, हाउ डू दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. And it opened the world of science to the eager young collector. Okay, and this book, you know, it opened the world of science, है ना, साइंस की दुनिया जैसे इस बुक की वजह से खुल गई है. टू दिस ईगर किसको कहते हैं, मैंने बताया, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है. ओके, तो दिस यंग कलेक्टर इज वन हु कलेक्ट्स थिंग, है ना, तो ही वाज द कलेक्टर ऑफ बटरफ्लाईज. तो इसके अंदर और ईगरनेस पैदा हो. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. Do you know what is a migration? What is a migration? One place to, मैम, एक जगह से दूसरी जगह जाना. हाँ, एक देश से दूसरे देश में जाना, है ना. Even the birds and all, they migrate. The birds of the cold countries, they migrate towards the Season. hot countries, है ना. हाँ, जैसे साइबेरियन cranes वगैरह Cold हमारे, season. हाँ, वो आती हैं. तो इसका भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा राइज हुआ इस साइंटिस्ट का जब उन्होंने बुक में पढ़ा कि मोनार्क बटरफ्लाईज दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. Now, at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. अब एंड ऑफ द बुक, जब ये बुक का एंड था ना, तो उसमें जिस भी राइटर ने लिखा था उन्होंने इनवाइट करा था रीडर्स को कि जो भी रीड कर रहा है टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, है ना, कैसे होते हैं, दे शुड बी हेल्प्ड. और रीडर्स को ये बोला गया था, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज, और उन्हें ये कहा गया था कि बटरफ्लाईज को टैग करें रिसर्च के लिए. ओके, टैग करना, यू गॉट इट, फाइंडिंग एंड उस पर कोई टैग लगा देना पहचान के लिए. बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्गुहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. यानी वो रिसर्च कर रहे थे, एंड द रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर हिम. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. अब क्या हुआ, एब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्कुहर्ट को लिखा, और बहुत ही जल्दी जो एब्राइट थे, ही वाज वैसे भी अर्लियर आल्सो ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड नाउ हिज इंटरेस्ट इंक्रीज, और बहुत हल्के से एडहेसिव टैग्स, है ना, बहुत लाइट कलर के, क्योंकि बटरफ्लाई इज वेरी लाइट इन वेट, है ना, तो बहुत हल्के फुल्के टैग्स पहचान के लिए, है ना, उसकी विंग्स पर ही हैड स्टार्टेड पुटिंग. Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart, right? और जो जिसे भी ये टैग बटरफ्लाई मिलती थी, है ना, इट वाज देयर, ओके, जिसको भी ये टैग बटरफ्लाई मिलती थी उसको ये बोला जाता था कि ये टैग किसको भेजा जाए, डॉक्टर उर्कुहर्ट. क्लियर और नॉट? yes, ma'am. Yes, And ma'am. why these tagged butterflies were sent to Dr. Urquhart? मैम,
वो रिसर्च करे उनके Yes, ऊपर। because very good, Rahul, because he was doing the research on monarch butterflies. Clear? Yes, Everyone? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. और काम? Ma'am. The butterfly collecting season around reading. Reading is the place, okay, where he was brought up. Last 6 weeks in late summer. अब जो रीडिंग के आसपास का एरिया था, है ना, वहां पर बटरफ्लाई कलेक्शन चलता था, एंड इट lasted, it just continued for 6 weeks in late summers. Late summers are end of the summers, okay? If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. Now the writer says ki if you are going to chase, है ना, if you are going to run after, this bhaiya has to be yes. So if you are going to chase them one by one, if you are going to follow them one by one, then it would be very difficult for you to catch those butterflies. So the next step for Ebride was to raise a flock of butterfly. Flock क्या होता है? पूरा झुंड. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. अब देखो, एक एक बटरफ्लाई पकड़ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो एब्राइट क्या करते थे? ही यूज्ड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज. तो वो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज को रेज करते थे. नाउ हाउ डिड ही रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज, यानी उनको कैसे, है ना, ब्रीड करवाते थे, एंड ही यूज्ड टू टर्न देम इनटू मैनी. व्हाट डिड ही डू? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क को कैच करते थे, हु यूज्ड टू गिव एग्स. ठीक है, अपने बेसमेंट में थ्रू लाइफ साइकिल ही यूज्ड टू कीप दैट फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई दैट गिव एग्स. अब एग्स जो होते थे वो टर्न होते थे टू कैटरपिलर, कैटरपिलर से टू प्यूपा एंड देन टू एडल्ट बटरफ्लाई. तो इस तरह से पूरा फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई हो जाता था, पूरा झुंड हो जाता था बटरफ्लाई का उनके पास. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. गॉट इट? How did he collected lots and lots of butterflies? It was not possible for him to collect butterflies that were flying here and there. उनको पीछा करना बड़ा मुश्किल होता था, तो एक फीमेल बटरफ्लाई वो पकड़ लेते थे, that used to lay eggs. Got it? फिर एग से वो कैटरपिलर प्यूपा बन जाता था, और उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते थे सारे एग्स, और फिर उस पर टैग लगाकर ही यूज्ड टू लेट देम गो. और कहाँ पे जाते थे वो सारे टैग लगाकर? डॉक्टर उर्कुहट, who was doing research on these butterflies. For several years his basement was a home to thousands of monarchs in different stages of development. अब देखो, वो कहते हैं कि कई सालों तक, है ना, जो उनका बेसमेंट था, है ना, the lower part of the house, बिल्कुल नीचे, जिसको तहखाना वगैरह कहते हैं, it was the house of these monarch butterflies. Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. But what happened? After some time, slowly and slowly, he started losing his interest now in collecting monarch butterflies or tagging them. It is a tedious and there's not much feedback. Okay, अब उनको लगता था बड़ा tedious है, it is a long, a boring work, and it did not give a very good return. उसका feedback, it was not so good. Ebride said, in all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured. और कहते हैं जितनी भी butterflies को, है ना, मैंने tag करा था, उसमें सिर्फ 2 ही butterflies they were recaptured. Okay, they were captured again, and they were not more than 75 miles from where I lived. और कहाँ टैग करी गई थी? Not more than 75 miles से ज्यादा distance पर टैग नहीं करी गई, and only 2 of the butterflies were tagged. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. Now see, when he was in the 7th grade, you know, ठीक है, then he got a hint, उनको hint मिला कि real science आखिर है क्या, और वो कब पता पड़ा, when he attended a science fair. Okay, when he participated in a science fair, a science contest was there, and there he got lost. और उन्होंने से ना साइंस फेयर में, जैसे साइंस फेयर लगते हैं कि नहीं, इवन वी विजिट सो मेनी टाइम्स, ओके, उसमें पार्टिसिपेट करा, बट ही गॉट लॉस्ट, वहां पर वो हार गए. तो वो कहते हैं इट वाज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वन समथिंग. अब उनको कब एहसास हुआ कि व्हाट इज रियल साइंस, when he participated in the science contest or science fair. There he got lost. Why? He saw that everybody was winning the prize and he was only the one who did not get any prize. Okay, he lost. Ebright कहते हैं, his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. Underline कर लो. What was his entry in the science fair? स्लाइड्स बतानी थी उन्हें फ्रॉग टिश्यूज की माइक्रोस्कोप के अंदर. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Okay? और उन्होंने देखा कि जिन्होंने prizes win करे थे, they really did, you know, real experiments were done by them, not a neat display. उनकी तरह सिर्फ display नहीं करना था कि slides पर frog tissue दिखा दिया and he might won. Their experiments were real. Got it? Yes, ma'am. Only Irfan understood. Samiksha? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, ma'am. See, first he collected at least 25 species of butterfly. He thought that that was the enough collection. But when his mother, you know, got a book about the monarch butterflies, his interest it increased and he started collecting. And in that book, the readers were urged to tag the monarch butterflies and send it to Dr. Urquhart. So even mother, you know, she was interested in all these things and she encouraged and inspired Richard to collect the monarch butterflies. How did he collect? He says that it was not possible to collect so many butterflies or to chase him to follow those butterflies, है ना, इतनी सारी तितलियों के पीछे भागना बेटा पॉसिबल नहीं था. तो उन्होंने क्या करा, फीमेल बटरफ्लाई ली. दैट फीमेल बटरफ्लाई इट ले एग्स. गॉट इट और नॉट? फिर वो एग्स किस तरह से, है ना, कैटरपिलर में कन्वर्ट हुए, प्यूपा में कन्वर्ट हुए, एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू एडल्ट बटरफ्लाइज. तो इस तरह से बहुत सारे एग्स थे, तो वो बहुत सारी बटरफ्लाइज बन गई, मोनार्क बटरफ्लाइज. उनको टैग कर कर वो छोड़ देते थे. लेकिन फाइनली अ टाइम केम व्हेन ही गॉट वेरी मच टायर्ड ऑफ ऑल दिस एंड ही थॉट दैट इट वाज अ वेरी बोरिंग and a long job. Okay, why? Because he did not get any good sendback. Feedback, sorry. Okay, he did not get any good return. और वो कहते हैं जितना भी मैंने करा, इतने सालों तक काम करा, only 2 of the butterflies they were recaptured, है ना, सिर्फ 2 ही recapture हुई थी, बाकी का पता नहीं था. and वो भी ज्यादा दूर नहीं, only 75 miles away from his home. Finally, he came to know what is real science when he participated in a science fair, जहाँ पर he had to show the slides of frog tissues. तो वहां पर he got lost, है ना, वो हार गए थे. तो उनको बहुत फील हुआ जब उन्होंने रियलाइज करा कि जो बाकी विनर्स थे, they had done the real experiments, है ना, सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, the experiments were real. Then he realized it. Clear? yes, ma'am. Okay then. Fine, beta. We'll continue tomorrow. Okay. God bless you all.